Welcome to all the class 9 students in our chemistry class. For class ninth only, chapter number 1. The name of the chapter is Matter in Our Surrounding. Before we start our class, first thing I tell you all that in ninth class it's totally different, as you all are studying science in your 8th standards. So what is the difference? The difference is only that here you have to study all the chapters very thoroughly, and the questions are coming from the topic, not just after reading out the chapters you're going to do the exercise, and the questions in your exam are coming from the exercise. You have to learn, you have to study all each and every topic that are present in the chapters, whether it is chemistry, whether it is bio or your physics. So your science is book will be one, but it will be divided as chemistry, in chemistry, biology, and 4 4 5 5 chapters are there in chemistry, biology, and your physics. So we are going to start the first class with chemistry, matter in our surrounding. So first I'll just tell you what are the different subtopic of this chapter. The subtopic first is your physical nature of matter. Second will be diffusion, characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. These are the characteristics. After that we will discuss very thoroughly states of matter: solid state, liquid state, gaseous. This you all have studied in your earlier classes. Also change of states of matter, what is latent heat, what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization, effect change of pressure, evaporation, plasma, Bose-Einstein condensate. With these topics, after discussing all this, we are going to end up with the chapter. So first we discuss about the first subtopic of this chapter, that is physical nature of the matter. Matter in our surrounding, matter, chemistry. What is chemistry and what is matter? Whatever thing that you all see around you, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम chemistry, under the chemistry we are going to study all these things. So matter, a thing, right? Introduction, if we come to that, physical states of matter, physical nature of matter is what, right? So let's start with the chapter with its introduction. Since early time, human beings have been trying to understand their nature. Early Indian philosopher classified matter into 5 basic elements. जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट, पंच तत्व, द वर्ड विच वी hear in हिंदी, पंच तत्व, they have said about matter कि एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई, water, these all are included in matter. According to them, living as well as non-living things are made up of these metals. जितने भी livings और non-living things है, ये सब पहले तक क्या कहा जाता था कि ये सब मैटर में ही इंक्लूडेड हैं. हर चीज़ यही 5 हिस्सों से बनी हुई है. सो दिस इज़ ऑल सेड बाय अर्ली साइंटिस्ट. आफ्टर नाउ अ डेज साइंटिस्ट इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं मैटर के sum up में. So what are those classifications? Physical properties or chemical properties, chemical nature. On the basis of these 2 things, they are going to classify what is matter. So they are come up with the properties. Now first comes to physical nature of matter. What is physical state? Physical mean what? Anything that you can see, that you can touch, feel, that is all matter. So matter is made up of particles. So the first point comes here, matter made up of particles. All matter constitute very small particle. These small particles are called the atoms. तो उन्होंने कहा कि मैटर हमारे जो चारों तरफ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और यही स्मॉल पार्टिकल्स का नाम दिया उन्होंने कि ये एटम्स हैं. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, अगर हम वो सॉलिड, अगर हम स्टोन को देखें, अगर हम अपने चारों तरफ
मिट्टी को देखें, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब मिलके ही आपका मैटर बना हुआ है, स्टोन बना होगा। स्टोन को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करें, पीसेस में डिवाइड करें तो उसके टुकड़े होंगे, और स्मॉल पार्टिकल्स वो छोटे से छोटा जो उसका पार्ट है वही आपका कहलाया जा रहा है यहाँ पे एटम। उसी को उन्होंने कहा कि ये एटम्स हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हम किसी भी स्टेट, किसी भी फॉर्म को अगर हम तोड़ते जाएं, जैसे कोई ब्रिक ले लें, हम ईंट उसको तोड़ें, डिवाइड करते जाएं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, छोटे से छोटा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड। अभी तक साइंटिस्ट ने ये बोला कि मैटर का जो पार्टिकल, जो एटम है, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ है। वो छोटा अंतिम पार्टिकल वो एटम होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते। और दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। दे आर नॉट स्टेबल, कि उसको पार्टिकल को हम एक जगह रख दें तो वो वहीं रखे रहें। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें एक काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहती है जिसकी वजह से मूव करते रहते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, सो पार्टिकल मूव फास्टर। और अगर हम इनका टेम्परेचर किसी भी स्टेट में, जैसे वाटर है हमारे चारों जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे चारों तरफ सैंड है, ब्रिक है, सॉइल है, लिक्विड स्टेट में वाटर है, गैशियस स्टेट में जितनी भी गैसेस हैं अराउंड सराउंडिंग्स में, सो एटमॉस्फेयर में, सो ऑल दीज ओवरऑल हम इसको मैटर कह रहे हैं। एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड possess mass, that has mass and occupies space is known as matter, right? This definition also you have studied. After this, with that, one point comes here about a diffusion, right? Word diffusion. In word diffusion, what is there? Diffusing, some kind of thing is mixing. So intermixing of the particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So here diffusion is what? It is intermixing of particles of two different types of matter. When types of matters are there, suppose liquid is there, solid is there, so those two different types of matter forms are there. If you're going to mix them up, then what is going to happen? उन सब में ही particles होंगे. Before discussing this diffusion topic, if you're let me make the thing clear. In matter, what are the things that are there? Matter can be in solid state, can be in liquid state, can be in gaseous state. That are the states of matter, right? So उस state of matter में हम ये सारे points include करते हैं कि matter है क्या, ये particles, ये छोटे छोटे particles, ये क्या, इस किसी भी मैटर फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड हो, गैशियस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, उन सब में ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे. सो यू शुड स्टडी these in starting points. After that we are going to discuss this diffusion topic also in our other class.